Hello everyone. Now we are going to study next part of your structure of prokaryotic cell. We have seen in the structure of a bacterial cell, we have completed this cell envelope. It is made up of three layers: glycocalyx, cell wall and plasma membrane. We have seen the details of that three layers and the functions of each layer. Now let's move inside the bacterial cell. You have the diagram. This diagram we have completed with the three layers. Now this diagram, this is glycocalyx, cell wall, and the third layer is your plasma membrane. Okay, inside that there is your cytoplasm. Means we are going to study the cytoplasm today and some other structures that are present in cytoplasm. Okay, cytoplasm is the crystallocolloidal material. It is the ground substance in bacterial cell. Ground substance. क्रिस्टलोकोलाइडल मतलब क्रिस्टल्स भी उसमें कुछ और पार्टिकल्स के, कोलाइडल मतलब कुछ लिक्विड में मिक्स वाले कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, आयंस है, वाटर है. सो इट कंसिस्ट ऑफ, it forms the ground substance and it is the crystallocolloidal gel-like semi-solid ground substance made up of organic and inorganic materials. It consists of some sugars, some proteins, amino acids. So they are present in the dissolved form in this cytoplasm. Since cytoplasm is the arena of cellular activities, it is the main ground where major cellular activities takes place. Hence it consists of most of the chemicals that are required for various cellular activities. It is the site of metabolism in bacteria also. So इसमें ये सब चीजें present रहेंगी. Okay, here the differences in prokaryote and eukaryote can be also observed in cytoplasm also. Cytoplasm does not contain membrane bound cell organelles. Membrane bound cell organelles, these are absent here. मतलब इसमें अपने को membrane bound cell organelles such as mitochondria, chloroplast, Golgi body, endoplasmic reticulum, these structures are absent here. Membrane bound structures are absent in prokaryotes, they are present in eukaryotes, as well as it also lacks, cytoplasm is also without sap vacuoles. It is without sap vacuoles. Vacuoles are the sac-like structures which consist of liquid, water, minerals, and that content of that vacuole is known as sap, and that vacuole is known as sap vacuole. We will study it in plant cells. Okay, but that vacuoles are also absent. They are a kind of storage bag, एक स्टोर रूम जैसा है. एक्स्ट्रा की चीजें प्लांट सेल उसमें स्टोर करके, कचरा वगैरह उसमें स्टोर करके रखेंगे. सो दे आर कॉल्ड सैप वैक्यूल्स. उसमें डिसॉल्व्ड स्टेट में पानी वगैरह भरा रहेगा और उसमें कचरा, मिनरल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, शुगर्स उसमें स्टोर हो जाएंगे. सो दैट सैप वैक्यूल्स आर एब्सेंट हियर. Here membrane bound cell organelles are absent. Here you will also not find, you can also not see the streaming movement of cytoplasm. It is called cyclosis or cytoplasmic streaming. You will also not find this movement. Cytoplasmic streaming is also absent. Cytoplasmic streaming is also absent. Cyclosis is also absent in the cytoplasm of bacteria. What is cytoplasmic movement? तो इमेजिन करो एक डब्बा, एक बॉक्स लाइक सेल, उसके अंदर पानी भर दो. ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म रहते हैं, दे हैव अ मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट. वो अंदर का अंदर मूव होते रहते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स, साइटोप्लाज्म अंदर का अंदर मूव होते रहता है, इस तरीके से सर्कुलेट होते रहते हैं. बट इट सर्कुलेट्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. अपने सेल्स में ऐसा होता है. इधर कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली मूव होता है साइटोप्लाज्म के मॉलिक्यूल के साथ, यहां तक पहुंच सकता, यहां से मूव होके यहां तक पहुंच सकता. मींस दैट साइटोप्लाज्म इटसेल्फ हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल. वो ऐसे घूमते रहता पानी.
जैसे कि तुम पानी को गर्म करते अगर उसमें इंक डाल दो एक ड्रॉप, तो क्या होगा, पानी जब गर्म होगा तो इंक का ड्रॉप का जो कलर है वो इस तरीके से स्प्रेड होता है दिखाई देगा, वो मूव होता है दिखाई देगा. इट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट्स, वाटर करंट्स दिखाई दे. सिमिलरली साइटोप्लाज्म कैन मूव इनसाइड द सेल, बट सच मूवमेंट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज स्ट्रीमिंग मूवमेंट. स्ट्रीम्स तैयार होते हैं वहां पे साइटोप्लाज्म के, बट दिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट आर आल्सो नोन एज साइक्लोसिस और सिंपली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. तो ये तीनों चीजें यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये तीनों चीजें अपने को यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. मींस दिस विल बिकम द डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. ओके. Sap vacuoles are absent, streaming movement is absent. Now what is present? Gas vacuoles are present in certain bacteria such as your blue-green algae, okay, your various photosynthetic bacteria. This line was already given in NCERT. Gas vacuoles may be present in cytoplasm of various blue-green algae and some blue and green, purple-green bacteria. Blue and green bacteria, so they can show presence of gas vacuoles because they release certain gases. वो gases क्या होते हैं, यहाँ पे तैयार होते हैं और gases एक बबल जैसा हो जाते हैं तैयार. ओके, gases का एयर का बबल तैयार होता है, it becomes gas vacuole. It becomes gas vacuole. So they are present. Sap vacuoles are absent, but gas vacuoles are present in bacteria. So these are the points about your cytoplasm. Function: it is the main active area of cellular activity. Okay, cytoplasm also consists of certain other structures. इसके आगे नोट करने का है. That structures are cytoplasm में अब अपने को कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. Structures present in the cytoplasm are membranous structures. दूसरा रहेगा ribosomes, that we will study in different topic, उसको अलग से पढ़ेंगे अपन. Membranous structures, okay, and your nucleoid and your plasmid. ये सब अपन ने लिस्ट किए थे in the structure of prokaryotic cell. Means all these structures are present in the cytoplasm. Okay, let's see one by one the membranous structures. Membranous structures are different from membrane bound structures. क्या बोल रहा हूं मैं? Membranous structures are different than membrane bound structures. अब membranous क्या रहता है? They are made up of membranes. And what is membrane bound? Means they are unique structures. They are covered by their own membrane. उनका खुद का membrane है, वो उसमें पैक हुआ रहेंगे, वो अलग स्ट्रक्चर है. membrane bound, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, उसके खुद के दो मेम्ब्रेन्स. What is membranous structure? Membranous structures like mesosomes. Number 2, your chromatophore, and number 3, inclusion bodies. These are the 3 membranous structures that are found in cytoplasm. What are mesosomes? तो देखो, this is glycocalyx cell wall and this is your plasma membrane. We have seen in previous lecture. Plasma membrane forms infoldings and that infoldings are called mesosomes. Plasma membrane gives rise to mesosomes. These are the infoldings or the invaginations of plasma membrane. देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आएगा. कल मैंने बोल दिया था तुमको प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आता है. जैसे कि एक रूम के अंदर कोई पिलर अगर रूम के बीच में से गया है, तो अगर इनर लेयर को तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इमेजिन कर, तो पिलर ऐसा गया, तो जो पिलर रहेगा दैट विल बी योर मेसोसोम्स. मेसो मतलब बीच में, सोमा मतलब बॉडी, ऐसे बीच में एक बॉडी तैयार होगा लेने सब एक स्ट्रक्चर. लेकिन ये खुद अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक हिस्सा है एक प्रकार से देखें. ओके, मतलब इसका मेम्ब्रेन अलग नहीं है, इसका खुद का मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन से बने वाला एक फॉर्म वाला इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है. सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स. दे डोंट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसी तरीके से मेम्ब्रेन वहां पे हेल्प करे. बट दीज स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे हैव डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, दे हैव देयर ओन मेम्ब्रेन. इसके लिए मैंने क्या बोला, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट.
but membranous structures are present. Membrane bound cell organelles are absent, but membranous structures are present, such as mesosomes. What are mesosomes? These are the infoldings or invaginations of plasma membrane in the form of vesicles, tubules and lamellae. Vesicles, tubules or lamellae. What is vesicle? Vesicle is a round spherical structure. देखो ये वेसिकल बन गया लड्डू जैसा, ऐसा प्लाज्मा थैली जैसा एक बना लो, सिंपली राउंड स्ट्रक्चर. It is vesicle. What is tubule? A tube-like structure. This is a tube-like structure. एक टेस्ट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन करो, एक टेस्ट ट्यूब जैसा एक इनफोल्डिंग इमेजिन करो, एक ट्यूब लाइक. इट इज ट्यूबुलर. ओके, व्हाट इज लैमेllae? लैमेllae इज अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, थिन प्लेट लाइक. मतलब क्या होगा? मेम्ब्रेन है इस तरीके से, वो मेम्ब्रेन स्ट्रेट आएगा नीचे, वही से टर्न हो जाएगा और स्ट्रेट वापस ऊपर आएगा. एक प्लेट, एक शीट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ट्यूब जैसा गोल नहीं रहेगा. इट विल बी हॉलो, रेक्टेंगुलर, एक प्लेट जैसा पतला सा रहेगा. सो दैट विल बी दी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. I am trying to draw it like plates. These are tubes and these are vesicles. So जहाँ पे भी parallel plates आएंगे वहाँ पे word use करने का lamellae, singular lamella. Okay, lamella, lamellae. So these are lamellae, tubules and vesicles. Means mesosomes are present in the form of vesicles, tubules and lamellae. Mesosomes are either present in the form of vesicles or tubules or lamellae. They are the invaginations of plasma membrane. अब होता क्या देखो, जब वो मेम्ब्रेन ऐसा नीचे आ जाएगा तो उसके अंदर ऊपर गैप तैयार हो जाएंगे, जगह तैयार हो जाएंगी, हॉलो कैविटी तैयार हो जाएंगी. ये कैविटी के अंदर कुछ केमिकल्स रहेंगे, ये कैविटी में केमिकल्स रहेंगे, इसमें केमिकल्स भर जाएंगे एंड दैट केमिकल्स विल हेल्प इन सम सेलुलर रिएक्शंस. उसमें कुछ रिएक्शन होंगे, जैसे कि इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन सेलुलर सिक्रीशन. सेलुलर सिक्रीशन वाली प्रोसेस भी यही करें. कुछ सेल के अंदर बनेगा तो कचरा बाहर फेंकने का, कुछ अंदर से इधर अंदर लेने का. सो सिक्रीशन की प्रोसेस भी मेसोसोम्स विल कैरी आउट दैट प्रोसेस. इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए. जो सेल वॉल तैयार होंगी तो सेल वॉल बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगेगा, तो मेसोसोम्स विल डोनेट दैट मटेरियल. एंड डीएनए यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा. सो डीएनए जब रिप्लिकेट होगा, डीएनए का जब कॉपी तैयार होगी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए इज नोन एज रिप्लिकेशन. सो एक डीएनए के 2 डीएनए बनेंगे, तो 2 डीएनए तैयार होने की प्रोसेस में हेल्प करेंगे. इट विल हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन एज वेल एज इट विल हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स. When this bacteria will divide, जब इसके 2 टुकड़े होंगे तो एक बैक्टीरिया के 2 बैक्टीरिया जब तैयार होंगे तो डीएनए जो डबल हो जाएगा उसको आधा आधा बांट के देना पड़ेगा दोनों डॉटर सेल्स को. तो डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करके देने के लिए भी मेसोसोम्स, वो जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे, लैमेला डीएनए के बीच में घुसेंगे, लैमेला आधा डीएनए आधा इधर ऐसा वो मेम्ब्रेन्स उसको मूव करेंगे और उससे क्या होगा, डीएनए आधा आधा बढ़ जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए बिटवीन द 2 डॉटर बैक्टीरिया, इसका भी काम कौन करेंगे, मेसोसोम्स. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है. इसके अंदर इतने सारे सेलुलर एक्टिविटीज होती. मेसोसोम्स आर एक्चुअली दी टाइप ऑफ योर ऑर्गेनेल्स इन बैक्टीरिया. एक प्रकार के ऑर्गेनेल, लेकिन उसको ऑर्गेनेल नहीं बोल सकते बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन. दे हैव द मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, but they perform the activities just like your mitochondria, just like your other structures. सेंट्रियोल वगैरह का काम कर रहे हैं तो वो उन स्ट्रक्चर्स के जैसा ही काम कर रहे हैं. इसीलिए मेसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट. तो आपको समझ में आया किससे बनाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनाया है. वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में रहता है एंड इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्रीशन प्रोसेस. इट आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया. सी इट इंक्रीज द सरफेस एरिया. अब ये सरफेस एरिया कैसा बढ़ गया, अगर एक कपड़ा इमेजिन करो, ये कपड़े का एरिया फॉर एग्जांपल 5x5 का है तो उसका एरिया जो रहेगा 25, 5 to 5 स्क्वायर इमेजिन करो तो उसका एरिया कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर. लेकिन वही कपड़े को अगर मैंने फोल्ड कर दिया, उसके ऐसे फोल्डिंग्स तैयार हो, जैसे कि अपने खिड़की को पर्दा वगैरह रहता तो खिड़की के कर्टन्स अगर तुमने एक साइड में कर दी तो जगह कम हो जाएंगी, लेकिन कपड़ा तो उतना ही रहेगा 25, लेकिन कम जगह में बैठेगा. इतनी जगह स्पेस और बढ़ गई, मतलब इसमें और अपन कपड़ा बिठा सकते. देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, फोल्डिंग आने की वजह से वी कैन हैव मोर क्लोथ इन दिस एरिया ओनली. वही 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में और कपड़ा बैठ सकता. सो जस्ट लाइक दैट, एक स्ट्रेट मेम्ब्रेन रहना और उसमें एक फोल्डिंग आ जाना,
किसका एरिया ज्यादा है? ऑब्वियसली इसकी लेंथ ज्यादा है ना बेटा, इसकी लेंथ इतनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, इसकी तो 10 है चाहिए, 5 और 5 10, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा आ गई, मीन्स इट हैज इंक्रीज दिस सरफेस। तो इस तरीके से जब भी कोई ऐसे फोल्डिंग आएंगी, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वेरियस सेल्युलर एक्टिविटीज, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वेरियस सेल्युलर एक्टिविटीज, okay, increase the surface area for cellular activities. These are the functions of mesosomes. Now next structure is your chromatophore. Sometimes what happen, these structures, such structures, membranous structures में एक और membranous structure तैयार होता called chromatophore. Chroma means color, chroma means color, phore मतलब structure और body, phore मतलब structure और body, a body containing something colored material. Chroma or chromatophore, these are the colored bodies that are again same bacterial cell, plasma membrane and the 3 layers, okay, and there are certain colored bodies, membranous bodies, these are also attached here. They contain your pigments such as bacteriochlorophyll, phycobilins, okay, bacteriocarotenoids, bacterioxanthophylls, okay, bacterial photosynthetic pigments are present. Chromatophores consists of bacterial photosynthetic pigments. मतलब कौन सी प्रोसेस कैरी आउट होंगे यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस. दे आर जस्ट लाइक योर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, उसमें सनलाइट कैप्चर होता है और ग्लूकोज तैयार होता है. तो वो प्रोसेस यहाँ पे होंगी इन क्रोमैटोफोर्स. And that pigments which are required for capturing that solar energy, that pigments are bacteriochlorophyll, phycobilins, bacterial photosynthetic pigments. These are nothing but bacterial photosynthetic pigments. They are helpful in photosynthesis. So that process will occur in chromatophore. Chroma means colored. These pigments are colored, green colored, blue colored, purple green color. So therefore that pigments are present here. They are found in blue green algae or your cyanobacteria. Blue green algae or your cyanobacteria. Cyano मतलब blue green color. Cyano मतलब blue green color. Chloro मतलब green color. Chloro green. Erythro red. Erythro red. Then your next is your for example leuco colorless. Okay. Leuco means your colorless leukocytes, WBCs, erythrocytes, RBCs, red blood cells. तो इस तरीके से कलर्स रहते हैं अलग अलग. ठीक है. ल्यूटिया मतलब येलो कलर, xanthos येलो. So these are the words that refer to some colors. क्लोरो ग्रीन लिख के रख लो, तुमको ध्यान में रहेंगे. साइनो आते ध्यान में आना, ब्लू ग्रीन या ब्लू कलर. Okay, so these are the pigments. They are present here in chromatophores. They are involved in photosynthesis. Okay, they are found in blue green bacteria, purple green bacteria. Okay, these are chromatophores. They are also present in cytoplasm. And lastly, the inclusion bodies, they will contain certain organic and inorganic materials. So hence they are of two types, organic inclusions and inorganic inclusions. अब ऐसे कुछ यहाँ पे पाउचेस इमेजिन करो, छोटे छोटे. ओके, यहाँ पे कुछ पाउच, यहाँ पे कुछ पाउच. ठीक है. इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा, सच एज स्टार्च, ग्लाइकोजन. दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. स्टार्च भरा रहेगा, स्टार्च इंक्लूजन्स. ग्लाइकोजन शुगर है, स्टार्च इज ऑल्सो शुगर. ग्लाइकोजन इंक्लूजन. देन इनऑर्गेनिक में भी अलग अलग प्रकार है. फॉस्फेट इंक्लूजन्स, सल्फर बॉडीज, सल्फेट इंक्लूजन्स. These are inorganic materials, sulfates, phosphates. So ये सब क्या रहेंगे? एक प्रकार के स्टोरेज ऑर्गन्स रहेंगे. इनमें क्या होगा? ग्लूकोज, शक्कर स्टोर होंगी, शुगर स्टोर होंगी, ग्लाइकोजन स्टोर होगा, फॉस्फेट स्टोर होगी. रिएक्शन के टाइम पे लगेंगे तो इसमें से निकल के बाहर चले जाएंगे. एक्स्ट्रा होगा तो इसके अंदर आ जाएगा. मीन्स दे विल इंक्लूड सर्टन मटेरियल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज. आइदर दे आर ऑर्गेनिक इंक्लूजन्स और इनऑर्गेनिक इंक्लूजन. Remember, these are membranous structures. These are not membrane bound structures.
Make it clear, these are membranous structures, not membrane bound structures. Mesosomes, chromatophores, and your inclusion bodies. Remaining part will be continued in next lecture. We will see the nucleoid, ribosomes and plasmid in our next lecture.